मैगी से ख्याल आता है something to be eaten. Okay, cervical, musculoskeletal problems, paralysis, sleep problems, lots of aches and pains, low backache. Yeah, lots of aches and pains. This has become, the new problem of the day. Be it 60s, be it 30s, be it 40s. So, kya problem hai? Why are we suffering so much, which was not there in the earlier years? The lifestyle changes, the climatic changes, the food changes, everything is taking a toll on our health. Yes or no? In spite of having the best of technology and the so-called best of food, we are still suffering. My age is 35. Sandeep sir writes, just imagine 35 and he has to do something about his aches and pains, right? तो अब कितने लोग तैयार हैं खुद के ऊपर काम करने के लिए? How many of us are ready to work on ourselves? Satyendra sir, hands up. Anybody else? But honestly, काम करना पड़ेगा, hard work भी करना पड़ेगा. Okay? So we must be prepared for that. Okay, ready, so many ready. So just give me 2 minutes of your screen time. I will share what we are doing in Ashtaang Chikitsa. Thank you so much. Is it visible? Just a sec. Is the screen visible? Ashtaang Chikitsa online therapy for Neuro Musculoskeletal problems. That is what we are hearing from Ashtaang Chikitsa. कुछ लोगों ने लिखा cervical pain, some people talks about aches and pains all over, some people talked about knee pain. So everything comes under Neuro Musculoskeletal problems. Namaskar, I welcome you all to the Ashtaang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. So as we know, Ashtaang Chikitsa can also be used as a preventive method so that your internal organs are functioning at their optimum levels. As we can see among the audience, there are people as less as 35 who have started having problems already. So, जो youngsters हैं, they can use this as a preventive so that they can delay their neuromuscular health issues as much as possible. Now, I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. So Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtaang Chikitsa to address the structural issues of a human body. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. A profound way of addressing the aspects of a human body. Now let's come to the fact, who is this webinar for? आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ये कैसा क्वेश्चन है, ये वेबिनार किसके लिए? ये वेबिनार तो सभी के लिए जिसको प्रॉब्लम्स है, पेन्स है, नेक्स है. नहीं,
ये वेबिनार उन लोगों के लिए है जो अपने ऊपर काम करने को तैयार है. People who are tired of temporary treatments, looking for some natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing Neuro Musculoskeletal problems with Ashtaang Chikitsa. Freedom from pain and medicine. So Swamiji will be talking about the Ashtasharir, which I'll just give you a rough idea about. You will be hearing in detail about the Ashtasharir from Swamiji's video just after this. So what are the 8 Sharir or the Ashtasharir that we are talking about? The Shrishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti and the Vikriti Sharir. तो अभी जो प्रकृति एंड विकृति शरीर जो है वो न्यूरोमस्कुलर हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रकृति यानी कि द रीजेनरेटिव फैक्टर ऑफ द ह्यूमन सिस्टम एंड द विकृति यानी कि उल्टा, दैट इज द डीजेनरेटिव फैक्टर. तो होता क्या है, जब आपको पेन्स या इन्फ्लेमेशन ये सब होना चालू होता है तो इम्बैलेंसेस शरीर में आ गया है, यानी कि द बैलेंस इज नॉट देयर बिटवीन द डीजेनरेशन एंड द रीजेनरेशन. Especially for women post menopause, we get to see this because the imbalances become very, very apparent. So what do we need to do to balance these imbalanced factor, that is the degeneration and the regeneration, so that the regeneration is also really, really fast as the degeneration. So Ashtaang Chikitsa can cure. Of course, there are n number of diseases and more that we get to hear from the participants every week. But these are a few of them which is commonly seen among participants. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. So let's hear from Swami Raj Vibhuji what exactly are we doing at Ashtaang Chikitsa, and you can understand how your body functions. Thank you so much for listening to me patiently. I would just give you an overview of the entire webinar. After this, you will be hearing the recorded video of Swami Raj Vibhuji to understand why these aches and pains happen and how you can work on yourself to come out of your current problem. Then we will be inviting somebody live who is going to share his journey of Ashtaang Chikitsa. Of course, we are going to share the program details. Excuse me. After that, Swami Raj Vibhuji himself will be coming live to answer all your questions possible in the stipulated time. So, देर ना करें, जल्दी से लिख डालें आपके problems जो आपको परेशान कर रहे हैं, along with your name and contact number. Thank you so much for listening to me patiently. Namaste, and over to Anilji to share the recorded video. So let's start. Neuro Musculoskeletal problem. We are talking about Neuro Musculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में
नी पेन से स्टार्ट करता है, राइट? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg, है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी। और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम। डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो, people are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए। रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग। दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है। If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला। So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, because there is a kidney problem, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes, what does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. हार्मोन इंबैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन। सो व्हाट आर यू डूइंग टू बैलेंस योर हार्मोन्स? देयर इज नो वे, कोई तरीका नहीं है। नाउ इफ द ऑस्टियोपोरोसिस हैज हैपेंड, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर। इफ दे हैव बिकम ब्रिटल बाय कैल्शियम, हाउ मेनी पीपल हैव कम आउट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है। Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem,
then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chikitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा, to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start. Ashtang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, in yoga कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए,
What happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, इफ यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, देयर आर सर्टेन सीन्स दैट यू डोंट वांट टू वॉच. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, सी अ किड, द किड विल क्लोज द आईज. सो यू होल्ड योर सेंसेस ऑल्सो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. यू होल्ड योर ब्रेथ. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtaang Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders?
आपको एक शोल्डर में जॉइंट प्रॉब्लम आएगी ना. सो इफ यू हैव वन लेग अ लिटिल लॉन्गर देन द अदर लेग, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a backrest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसअलाइन हो सकती है. That part is called as caudy. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसअलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, caudy, nale. Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा है ना. आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of caudy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें. जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, Pramana Sharira.
प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण। चौथे पे आ गए हम, प्रमाण। प्रमाण मीन्स डेंसिटी, इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी। इसी को धातु भी कहते हैं, वी कॉल इट धातु। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं। लाइक बोन इज वेरी मच डेंस, हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है। योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें। और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स। जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है। पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन, वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है। So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु। 7 different density tissue की है आपके शरीर में। There are 7 different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं। If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड। सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन। हमारी ऑर्गन वीक हो रही है। व्हाट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। व्हाट इज हाइपोथायराइड? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Or kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there, है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को। देयर इज नो मेडिसिन, देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन। दवाई हो ही नहीं सकती है। सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली, आपको अंदर काम करना पड़ेगा। अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं, यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? बट पीपल इनटू स्पोर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, दे आल्सो गेट डायबिटीज, दे आल्सो गेट हार्ट अटैक। 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है। एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन। एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला। सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें। नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस, अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से। मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड, कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड। जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को, पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए। हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड। करके देखिए दोबारा, अगेन डू इट अगेन, सी, पुश इट हार्ड, यू होल्ड योर ब्रेथ। सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना। यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट। सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? Weight कैसे lift करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना। This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं। क्या होगा? What will happen?
यू आर नॉट क्रिएटिंग एन एक्सटर्नल ट्रिगर. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको, तो कहां जाएगा ये डायरेक्शन, कहां जाएगा? इंटरनली. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज, आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी, चलिए यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. देयर आर जंक्शंस, मसल एंड नर्व जंक्शन, मसल एंड बोन जंक्शन, टू बोन्स एंड देयर इज अ जंक्शन. ऐसा ही है ना, दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, लंग्स, ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज कनेक्टेड. ये सब जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो जंक्शन पॉइंट है, दिस जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज मर्मा. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called murmurs. So murmur needs a constant rejuvenation. इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली मेक them मूव इन अ पर्टिकुलर वे कॉन्स्टेंटली. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग अनदर एग्जाम्पल. इफ योर मर्मस आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सर्कुलेटरी मूवमेंट इन योर बॉडी. आपके शरीर में दो तरीके का मूवमेंट होगा, ब्लड सर्कुलेशन एंड लिम्फ सर्कुलेशन. ऐसे मान के चलिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, देयर आर टिश्यूज एंड सेल्स. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे खटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक हार्ट है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be
प्रकृति, न्यू सेलुलर फॉर्म, बेटर सेलुलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेलुलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in Ashtaang Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtaang Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. सो एवरीबडी इज एजुकेटेड. यू नो एटलीस्ट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड वात, पित्त, कफ. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you will get a joint pain relief. Temporary, it's very temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that.
There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now been busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, kumbhak is a way to change genetics. When you do kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure.
whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा feel होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose. In prana shakti diagnosis, यही prana shakti diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक module सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti
Vikriti, Sankhya, Praman, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये कॉमन सेंस कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं. दैट इज व्हाई मोर मेडिसिन, मोर डिजीज इन द लास्ट 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. दिस इज द ओनली गैजेट विच इज सेल्फ करेक्टिव और इट करेक्ट्स इटसेल्फ. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important, wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गई. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Sudhakar sir, who's a participant of Ashtaang Chikitsa, to share his journey of and experience of Ashtaang Chikitsa. Sudhakar sir, am I audible? Yeah, ma'am. Am I audible? Yes, thank you sir for joining us. I'll just put you on spotlight. Yes, Sudhakar sir. Sir, you can unmute yourself, please. I'm muted. Now, am I audible, ma'am? Yes, you're very much audible. Before joining the classes, I was like, I had to hold my thighs for to walk. So much of pain, and to walk just few steps, it used to take time. And I used to take medicines of 47,000 rupees or injection every month. For ankylosing spondylitis. I'm taking from last 2 years, nothing helped. And I used to take Medrols, Ashtaang. These are all strong medicines, painkillers. After joining, I slowly experienced, and pain is gone. Pain is gone. No, there is no pain now. And I stopped the medicines. I only take some Ayurveda medicines. I completely stopped English medicines. Thank you so much, Sudhakar sir, for sharing your journey of Ashtaang Chikitsa. No, ma'am, I should thank you and Swamiji. Finally, I could take my favorite car out for a driving. Thank you so much. I couldn't walk. Now I can drive the car. Thank you, ma'am. Thank you so much. How long were you suffering from, sir? How long have you had ankylosing? It's an autoimmune disorder. No, 12 years, but from last 1 year, I've been very depression. I was depressed because I couldn't walk, I couldn't sit, I couldn't go anywhere. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Okay. I'm really grateful for you. Thank you. Thank you so much, sir. Padmavati ji, ma'am, you can you hear me? Padmavati ji, ma'am.
You can. Yeah. Namaste. Yes, yes, namaste, ma'am. We'll just put Yeah. you on spotlight. Yes, yes. Yes, ma'am. Actually, I'm very thankful. Good evening to everyone. I'm very Good thankful to evening. Swami. I was, to say it, I was very lucky to suddenly, all of a sudden, I just saw this advertisement or something, one of my friends' video. So after having joined this in 12th of December, I have completed 2 modules. Actually, I was suffering from viral arthritis. That was identified 6 years back. Then after uh, a year, continued. Like I had episodes of recurring pain and lower back pain. I was also working, and it was very difficult for me to manage all that. But after having practiced these kriyas, kumbhaka, and andanyasa, there is a lot of considerable reduction in the pain. I'm still taking Ayurvedic medicines, but painkillers I'm avoiding as far as possible because now I'm not feeling much pain. Body feels light and agile and more flexible also. And I used to feel that heaviness. Now it is not there. And I have a migraine problem also, but now I don't find it frequently. So all these are like I would like to continue this for my lifetime because I like to, I'm a sports person. Like I like swimming. I used to play badminton. So, but since now I have been occupied with the housework and all, but still these things are really giving me a lot of benefits. I would like to continue and keep continuing this. And I would also like to refer everyone, like whomever possible, who is going through this pain, to everyone. And thank you, Swamiji. I'm very grateful. And to you and mentors for all doing a very great job. Thanks a lot. Thank you so much, Padmavati ma'am, for joining us and sharing your journey. Now Thank I you, would thank like you. to request Anilji to please share the program details for which the participants are eagerly waiting. Yeah, just give me a few seconds. Are you able to hear me? Yes. Okay, great. Let me share my screen and we'll get to know the details of the program. Rachna ji, are you able to see my screen? Yes. Okay. All right. So let's get to know the details of the program, which a lot of you may be waiting for, and we'll have Swamiji just after this so that he can answer all your questions. First of all, this is a guided program which is conducted online by trained कुंभक mentors. कुंभक mentors स्वामी जी द्वारा trained होते हैं और वही सभी mentors आपकी classes को conduct करते हैं. Right? That is the first thing. Program modules. As you must have known by now, in the video also, Swami ji talked about the 3 modules. 3 module है program में, module 1, 2 and 3. Or you can call them Vath module, Pith or Kapha module. Duration of each module is 21 days. हर एक मॉड्यूल का जो ड्यूरेशन है वो 21 दिन का है. So total duration of the program becomes 63 days. 9 हफ्ते का ये पूरा प्रोग्राम होता है. If you see, it's written 9+1. Why 1 week extra? We'll get to know in a short while. ये 10 हफ्ते क्यों हैं हम थोड़ी देर में जानेंगे. Classes, there'll be 2 live classes every week. हर एक हफ्ते 2 क्लास होंगी. One will be the learning class or the main class and one will be the mentoring or the practice class. 2 जो क्लासेस होंगी, 2 जो आपको जूम क्लासेस मिलेंगी, एक लर्निंग क्लास है जिसमें आप सीखेंगे या मेन क्लास बोल सकते हैं और एक रहेगी प्रैक्टिस क्लास. आगे के स्टेप्स क्या हैं? What are the next steps? You pay the program fee and we have a special webinar pricing for people who stay back. And after that, you fill the participant onboarding form so that we can create login credentials for post access. ये login credentials क्या है? हम थोड़ी देर में जानेंगे. And then you start your classes starting with module 1.
then module 2 and then module 3. सबसे पहले module 1 आप ज्वाइन करेंगे, फिर जाएंगे module 2 में और फिर module 3 में. Total classes, again, module 1 will have 6 classes, 3 learning and 3 mentoring or 3 practice classes. Same is for module 2 and 3. So total 18 classes. But if you see below, there's one extra class, which is customization class. ये customization class क्या है वो हम जानेंगे. And so the total engagement becomes 10 weeks. So total जो 9 की जगह 10 हफ्ते का total program duration हो जाता है. Batch 115 115वां बैच स्टार्ट होगा 30th जनवरी, जो कि एक मंडे है, 6:30 बजे, 6:30 PM, 30th जनवरी मंडे द बैच इज स्टार्टिंग. मेंटर क्लासेस क्या होंगी या प्रैक्टिस क्लासेस? मॉड्यूल 1 के लिए मेंटर क्लासेस होगी थर्सडेज को. For module 1, the mentor classes will be on Thursdays. For module 2, mentor classes or the practice classes will be on Fridays. And for module 3, the mentor classes or the practice classes will be on Saturdays. We'll share all the details in the WhatsApp group as well as on chat on Zoom. So need not worry. What is the class experience like? Class ka experience kaisa rehta hai? These are live sessions, as you must have understood by now. Mentors watch all the participants, and this is the reason you have to keep your cameras on during the classes. You get written instructions in English and Hindi, which you can download and take a printout. And then you get session recordings also. All the classes are recorded and made available to you through a login ID and password. There'll be a lot of extra things that will be included in the program. There'll be a lot of mental practices. There'll be a unique diet perspective. Mind you, it's not a diet plan, because diet plans do not work, because everybody's bodies are different, their systems are different, but it's a diet perspective. You get a video from Swamiji which talks about the basics of food, how to use food so that it supports your body and not harm it. Then there'll be simple detox processes, and a lot of knowledge will be shared during the program. Now, I've written yearly expenses that you could already be spending to manage the disease that you're in. These figures can vary from city to city. I've written, these are yearly figures. Doctor fees could be 6,000 to 12,000 every year. Then if you're into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 you could be spending on physiotherapy. Medicines, another 15,000 to 30,000. So if you total all of these, 33,000 to 72,000 per year, you could already be spending just to maintain the disease that you're into. And the side effects of allopathic treatments, we all know about it, so we will not talk about it so much here. Why I'm sharing you these figures is because when I share the program fee with all of you, you'll realize that this is so economical that almost everyone can afford it without any side effects and with a permanent solution. Because why I'm sharing these figures? Because we as humans, we like to compare things, be it a therapy, a product, a piece of cloth, whatever. So the fee of the program is very, very minimal compared to the expenses that you may already be doing. So that's the reason I shared all this with you. And before I share the program details, it's also important to know who this program is not for. ये जानना भी जरूरी है ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके who this program is for, right? Let's see. This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. I'll just like to elaborate. Taking a pill or taking medicine, especially allopathic medicine, has become a habit because from the childhood we are used to it. आप भी अगर आप अपने घर में देखेंगे, if you look around in your family also, as soon as a child gets bit of cold and cough, we don't allow the body to recover. उनको दवाई तुरंत देते हैं because we are worried as parents, as grandparents, but तो उससे relief मिलता है for a short time, but that's the habit that we have, got into. ये आदत बन चुकी है तुरंत दवाई एकदम से कुछ भी लेने की, शरीर को हम मौका नहीं देते हैं. सो इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है. There's nothing like this in this program. No medicine is used. And if you're looking for a result tomorrow only, so it may not happen. Just wanted to make it clear. And this is not for those who are not ready to work on their body, because
you'll be investing 80 to 90 minutes every day on yourself. A lot of people I talk to before enrollment, they say that we are so busy that we don't have time. So that's up to you. If health is your priority, topmost priority, then you need to invest. And I've written invest, not spend, because anything that you spend does not get you any return. But when you invest your time, it gets you, a lot of returns. So in this case, if you invest 80 to 90 minutes daily on yourself, you will get a huge return of health and permanent solution by curing your chronic ailments, which you haven't yet found any cure for. And this is not for those who are impatient. We understand when you're in pain, when you're into a problem, the patience goes down. But all said and done, still, please be patient. That's what we request you. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. Why I brought up this point is because you must have seen an advertisement where it says free introductory webinar for neuromusculoskeletal problems. A lot of people misunderstand that and think that the whole program is free. So that's why I wanted to make it clear so that you don't ask it again. The webinar is free because it's an introduction to Ashtaang Chikitsa, which not many people know about, right? So just want to make it clear because it's a 9 weeks program. There's a diagnosis, a lot of things go into this. So it's not free at all. And if you're looking for some tips, this program may not be for you because no tips are shared in this. Okay, because if you could solve a problem, your health issue through a tip, there are thousands and thousands of videos on YouTube. You could just go there and solve your problem. But permanent solution or healing does not happen through tips. So I just wanted to emphasize these two main points. Now, let's get to know what all you get in this program. The first point is Pran Shakti diagnosis or root cause determination. This in itself could be worth the whole cost of the program. Why? Because there are not many therapies in the market which can determine the root cause. बीमारी की जड़ क्या है, ज्यादातर जो therapies हैं वो पता नहीं लगा पाती हैं. So इसमें क्या होता है? This is first of all, this is a non-medical diagnosis, and this is an online diagnosis. How this is done online? I'll just explain in short. You'll get a form, and in which you'll get some questions, and you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotions, and you will record those in the form. The second thing that has to be done is you'll be writing about your problem, all the problems in detail in the form. And the third thing that will be done is you'll be uploading a selfie photograph in which your face should be clearly visible. There should be no specs. In case you wear specs or spectacles, they are not required. And in case of ladies, no makeup also. So when these things reach Swamiji, he is able to determine the root cause. If you paid attention in the webinar, he talks about the 84 forces. So which force out of those 84 forces has become weak due to which you landed in your current health issue, that he is able to determine. Okay. And based on that, there's something that's done in the 10th week. We'll get to know in a short while. Weekly, there'll be one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90? 60 is the actual duration of the class. Then we take up questions. The doubts are cleared in the live class only. So that's why it may extend up to another 20 to 30 minutes. Then weekly, one practice class of 60 to 90 minutes. Online course access for 6 months. What is this online course access? As I have already told you, all the classes are recorded and their recordings are stored inside a course dashboard. And you'll get a login ID and password so that you can access all those recordings and watch them again and again. Maybe if you require, you can watch it as many times as you want. So this recording, this access to the course videos will be available for next 6 months, even after the program is over. Okay, so no problem at all if you miss any classes. Then videos of all kriyas done in the class. How this is different from the last point? In the last point, the whole class is recorded, 60 to 90 minutes duration. But this point, this fifth point,
It means videos of all the Kriyas separately. For example, some Kriya may take 2 minutes, some may take 5 minutes, 10 minutes or 20 minutes. So you don't have to watch the whole recording of 90 minutes to watch just a 2-minute Kriya. This way you'll save a lot of time. So the videos of all Kriyas done in the class will be provided through the course dashboard. Then there'll be written instructions in English and Hindi, which can be downloaded and you can print out and refer those instructions on a daily basis when you are doing your daily Kriyas. Then private WhatsApp group to ask your doubts and questions. Like I told you, there'll be 2 live classes, but on the remaining 5 days, when you're practicing alone on your own, and if you have any doubt that time, so you'll be asking all your doubts and questions inside this WhatsApp group. Okay. And this, you'll be able to do this 6 days a week. Sundays, the mentors are on a weekly off. So you can ask every question or doubts on a daily basis, right? And then individual participant progress tracking or feedback. We track every participant's progress in the Ashtaang Chikitsa program so that we can know that you are progressing and making good. If you're not, then we find out the reason why. Okay. And then therapy customization for each participant in the 10th week. If you remember the first point about Pran Shakti diagnosis for root cause determination, now that will be used in the 10th week. Based on this diagnosis, your therapy will be fine-tuned and customized as per the diagnosis. And this way, all the participants will get a customized practice sheet. This will be different for all the people. Then extended support for 30 days after the program is over. You still get another 30 days when the program is over after 10 weeks. You get 30 days to ask your doubts and everything. But not many people will require this, because if you're practicing on a daily basis and if you're clearing your doubts on a daily basis, then, but still, because many people, they miss their classes for a number of days due to some illness or due to some other reason. So you need not worry about it. We've taken care of all the places where things can go wrong, so that you are able to attend the program without any issues at all. Now, program fee for Ashtaang Chikitsa, Indian rupees 14,500. This is the fee that you must have been waiting for. A lot of people wait, let's see kitni fees hoti hai, because that's the most interesting part. But as I already promised you, there's a special webinar pricing for the people who have stayed back. Let's get to know what is that special webinar pricing. Just 6,500 rupees for the complete program. All the 10 points that I mentioned, the Pran Shakti diagnosis, the customization, the support in the WhatsApp class group, and then recorded session, the instruction written in English and Hindi, everything is included in this. So this has been made so affordable that you can easily do the program without any financial burden, right? So how to enroll now? You pay the program fee. Step 2 is to post the payment receipt in the WhatsApp group. Then step 3 is to fill the participant onboarding form so that we can create login IDs and passwords for all of you. Then step 4 is to join the class WhatsApp group, where you'll get the support and you'll be able to ask your question. I just mentioned about this. And then you start attending classes. It's a simple 5-step process. We'll share the details, the payment details in WhatsApp as well as on in the Zoom chat also. And before I end my presentation, my part of the presentation, I'd like to talk about the super team, which will be supporting you every day throughout your 10 days of program. We have Rachna Shrimal Bothra. She is the program director and the host of this webinar also. Shalini Bhagwat, she is the class manager. She takes care of the classes, the timings and everything. Ashwini Kumar is the IT manager. We have mentors, Pooja Chopra, Ranjana, Sukesh, R.D. Gupta ji, Soni Chhabria, Aruna, Neena Rai, Suruchi Gol, Arundhati man. Then Neha Upadhyay, she is the enrollment in charge. She'll be the person you'll be talking to the most before enrolling about
how to pay, you'll share all the receipts with her. She'll be the person who will be confirming all your receipts. Anil Chauhan, that's me. I'm the WhatsApp group admin. I'll be answering most of your questions in the WhatsApp group, because soon after this, Swamiji will be live to answer your questions. But if due to shortage of time, if your question is not taken or not answered, please do not worry. You can post your question in the WhatsApp group and we'll answer that for you. Every question will be answered, so please be assured. Then Himanshu Reddy, he is the technical person who takes care of all the recordings, the uploading the recordings, the uploading the written instruction. So when you enroll and if your video is not working, if you're not able to access, so he'll be the person who will be assisting you. Then we have Anita ji, she is the personal support in charge, and she'll be calling you each and every participant. You'll get her number also in case you want to talk to her and you don't want to get your answer in the WhatsApp group. You'll get her direct number also. Okay, so we've taken every possible care to support all the participants so that you don't feel left out, because we understand that this is an online program. So we've taken every possible care of all the places where you can find any difficulty or anything like that. So with this, I come to the end of my part. Namaskar. Rashna ji, please carry on. Yeah. Can I be spotlighted, please? You're on spotlight only. Swamiji has joined and I've unmuted him and I'm putting him on spotlight. Okay. So we are towards the end of the webinar, and the most important part of the webinar is here. Swamiji himself has joined us, and we will be taking the questions one by one. So just give me 2 minutes. Namaste, Swamiji. Good evening. Namaste. Good evening to everybody. So I'll just read out the questions one by one. Okay. Sunil sir talks about acute spondylitis and also leg pain. So acute means what? Suddenly the intensity goes up. That is acute. Pain होता है ना आपको, तो sudden pain बहुत तेज होता है, that is acute pain. And chronic का मतलब क्या होता है? When it happens for a long period of time. थोड़े लंबे समय तक लगातार चल रहा है, तो that is chronic. So it's just the intensity. I would want that everybody understand these concepts, क्योंकि अंग्रेजी में कुछ आपको ग्रीक और रोमन टर्मिनोलॉजी में कुछ बता दिया. पहले आप अपनी भाषा में उसको समझिए, ठीक है ना? You are more intelligent than any other species in the world. मानवता में जितनी भी स्पीशीज हैं, ह्यूमन स्पीशीज, उसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? भारतीय हैं. प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी भाषा भी नहीं बोलते, एंड उनको कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ पढ़ा देता है. सो स्पॉन्डिलाइटिस, आइटिस जो आगे लगा हुआ है ना, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन क्या होता है आपको समझना चाहिए, ठीक है? इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन 2-3 चीजों की वजह से होता है. इफ देयर इज एन इंजरी, देयर विल बी swallowing, रेडिशनेस, वहां पे दर्द होगा, थोड़ी गर्मी होगी, वहां पे हीट बिल्डअप होगा, है ना? जब चोट लगती है आपको, तो दैट एरिया गेट्स इन्फ्लेमेटेड, है ना? वहां इन्फ्लेमेशन होता है. अच्छा, आपके बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन, सो हाउ विल दैट हैपन? आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, आर्थराइटिस, हाँ? और वो इन्फ्लेमेशन को कहां फील कर रहे हो? जॉइंट पे फील कर. कहां फील कर रहे हो? जॉइंट पे फील कर रहे हो. तो पहली बात तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए, मेरे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो क्यों रहा है? व्हाई इनसाइड माय बॉडी देयर इज एन इन्फ्लेमेशन? ये सवाल आपको पूछना चाहिए, ठीक है? तो यानी कि आपके बॉडी के अंदर इंजरी हो रही है या टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे हैं.
सही चीज नहीं बन रही, गलत चीजें बन रही। ठीक है ना? तो अब समझिए, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं, जो आपको ना तो गूगल समझाएगा, ना आपके डॉक्टर समझाएंगे, ना आपकी पढ़ाई लिखाई ने आज तक समझाया है। तो अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रखिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और समझें कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। इज दिस कंडीशन इंक्रीजिंग? क्या ये कंडीशन लोगों में बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है, बिल्कुल। लोग ऐसी प्रॉब्लम्स तो बढ़ रही है। क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या कोई सोल्यूशन है? क्या कोई दवाई है जो आपके आर्थराइटिस को ठीक कर देती है? नहीं, ऐसी अभी तक तो कोई दवाई नहीं बनी। ठीक है ना? ये भी आपको समझना, ये भी क्लियर कट समझना है। क्या इसकी कोई दवाई, क्या ये ठीक होता? नहीं ठीक होता आपके नॉलेज के हिसाब से, यानी कि मॉडर्न जिसे हम कहते हैं एलोपैथी के हिसाब से इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है? केवल दर्द को कम कर देते हैं। दर्द को कम करना भी गलत बोलना होता है, दर्द को मार देना यही काम करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप समझिए कि आपका शरीर काम कैसे करता है। तो आप शरीर को कोई ट्रिगर दो और ये रिस्पॉन्ड करेगा, है कि नहीं? ट्रिगर दें, कोई इसको इंपिटस दें, स्टिमुलस दें, और वो रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आप फूड डालते हैं तो क्या क्या निकलना चाहिए आपके शरीर में? रिस्पॉन्स कैसे करेगा? रिस्पॉन्ड कैसे करेगा बॉडी? इंसुलिन निकालेगा, थायरोक्सिन निकालेगा, इस तरीके से मेटाबॉलिज्म करेगा, इस तरीके से को पचाने का क्रियाकलाप कार्यक्रम करेगा। ठीक है ना? लेकिन आप सपोज कीजिए अपना फूड नहीं डालते, कुछ गलत डाल देते हैं जो आपका शरीर नहीं पहचानता, जानता नहीं है, आप डिजाइन नहीं है आपका शरीर, कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है? तो क्या होगा? रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? खतरा हो गया, मुश्किल आ गई, ये खतरा आ गया, रिस्क आ गया। आप भी ऐसे ही करते हैं ना? आपके घर में कोई अनजान आदमी घुसे चला है तो आपको तो खतरा होगा कि नहीं होगा? तो आपके शरीर में जैसे ही आप एक केमिकल डालते हैं, आपके शरीर को खतरा आएगा कि नहीं आएगा? शरीर को खतरा आ गया, अब इंसुलिन नहीं निकल रहा तो डायबिटीज हो गई जी। क्या हो गई? डायबिटीज हो गई। डायबिटीज हो गई, डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? आपको याद है दादा दादी नाना नानी आपके, उनको था डायबिटीज? या एक जनरेशन पीछे चलिए, 100 साल पहले किसको डायबिटीज था? किसी को भी नहीं। आपको हो गया, और फिर आपके डॉक्टर ने एक और बात बता दी आपको, जेनेटिक है जी, जेनेटिक है। तो 100 साल पहले अगर किसी को नहीं था तो आप क्या मार्स से आए हैं, जुपिटर से आए हैं, कौन से ग्रह से आए हुए हैं आप? तो हमने जेनेटिक बना दिया, क्योंकि आप कोई गलत चीज डालते हैं तो आपका जेनेटिक्स भी खराब हो जाता है, डिविएट हो जाता है। थायराइड की प्रॉब्लम 100 साल पहले किसी को नहीं थी। ठीक है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी को भी नहीं था। तो आपने कुछ गलत डाला ना। क्या गलत डाला? आपने दवाइयां डाल दी, बचपन से दवाई डाली ना। हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में इंसान मर रहा है आजकल। तो वहां तो शेड्यूल है जी, वहां तो आपको दवाई खिलाएंगे तभी उनका धंधा चलेगा। आपका शरीर तो डिजाइन नहीं है दवाई के लिए। तो बचपन से पूरा मृत्यु तक हमने मानव शरीर के ऐसे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस को खराब कर। अच्छा, और कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। एनवायरमेंट हमको एक स्टिमुलस और एक ट्रिगर देता है, हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है उसके साथ, क्योंकि वी आर अ प्रोड्यूस ऑफ एनवायरमेंट, हम वातावरण की पैदावार हैं। ठीक है ना? तो एनवायरमेंट ऑल्सो गिव्स अस अ ट्रिगर और स्टिमुलस, उसके हिसाब से हमारा शरीर भी तैयार होता है। आपको मालूम है कुछ जानवर एनिमल किंगडम में दे ओनली ब्रीड इन अ पर्टिकुलर सीजन, मालूम है ना? वो सालों भर नहीं है उनका हिसाब किताब। दे ब्रीड अकॉर्डिंग टू द सीजन बिकॉज द एनवायरमेंट गिव्स दैट ट्रिगर। अब अगर आपने एनवायरमेंट ही खराब कर दिया तो आपका शरीर हेल्दी कैसे रहेगा, ये बताइए? तो इतनी समझ तो होनी चाहिए थी ना। पर गोरे जो होते हैं ना, वो सबसे बेवकूफ प्रजाति है दुनिया की, आपने उनको अपना मालिक बना दिया। अब तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तो एनवायरमेंट को खराब कर दिया हमने। दूसरा चीज क्या किया? वी हैव क्रिएटेड अ डिस्टेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड अस। प्रकृति और मानव ने, यू आर लिविंग इन अ कंडीशनड एनवायरमेंट। ठीक है? एनवायरमेंट खराब किया। फूड, मेडिसिन तो एक बात बता दिया, एनवायरमेंट बता दिया, फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड क्रॉप, इनऑर्गेनिक क्रॉप, प्रोसेस्ड फूड। आप क्या खा रहे हैं? जो आपका भोजन नेचुरली नहीं है,
उसको बदल के खा रहे हैं, ऑब्वियसली ये रिस्पॉन्स टू ट्रिगर मैकेनिज्म आपके शरीर का खराब होगा ही खराब, और इसको आप डेवलपमेंट कहते हैं। तो होगा क्या कि लिवर आपका सेकंड ब्रेन है, लिवर को मालूम है व्हाट इज योर फूड, व्हाट इज नॉट योर फूड, क्या भोजन है आपका क्या नहीं है, आपके लिवर को मालूम। तो आप कुछ भी खा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, खराब भोजन कर रहे हैं, खराब एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, तो लिवर को प्रॉब्लम आती है। लिवर मेटाबॉलिज्म यानी कि फूड प्रोसेसिंग, आपके शरीर में जो फूड का प्रोसेसिंग होता है उसका पहला स्टेप लिवर पे ही होता। तो लिवर आप लिवर को बॉम्बार्ड कर रहे हो, लगातार बॉम्बार्ड कर रहे हो, केमिकल खा के, खराब भोजन करके, वो कमजोर हो गया। आप कमजोर होते हैं तो आप ज्यादा काम करना चाहते हैं, कम काम करना चाहते हैं? यू वांट टू वर्क मोर व्हेन यू आर वीक? नो, यू वांट टू रेस्ट मोर एंड द वर्क एफिशिएंसी गोज डाउन। काम करने का जो आपकी एफिशिएंसी है, जितना कर सकते हैं वो कम हो जाता है। अब लीवर जो है वो प्रोसेस करेगा या फिर मेटाबोलाइज करेगा, तो जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो टॉक्सिन होंगे, सही नहीं होंगे, तो आपके शरीर में टॉक्सिन ज्यादा बनेगा। इंजन खराब हो गया, धुआं ज्यादा निकलेगा, आपके शरीर में टॉक्सिन ज्यादा बनेगा। ये टॉक्सिन कहां डिपॉजिट होगा? जहां पे उसको जगह मिल जाएगी। इसे लिम्फ नोड कहते हैं, जहां भी गैप होता है उसको लिम्फ नोड कहते हैं, वहां जमा होता है। ये आपके सारे जॉइंट्स है, वहां पे टॉक्सिन जमा हो गया। टॉक्सिन जमा होगा तो ज्वलनशीलता पैदा करेगा अंदर, इसी को आइटिस इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ज्वलनशीलता पैदा करेगा। ठीक है ना? अब आपके नी में ज्वलनशीलता आ गई, या किसी हाथों की उंगलियों में आ गई, या कहीं कंधे पे आ गया, रीढ़ की हड्डी में आ गया, कहीं पे आ गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या बोलेंगे? अरे जी ऑपरेशन करा लो, घुटने ही बदलवा लो, हम तो ठीक नहीं कर सकते। किडनी खराब हुआ किडनी बदलवा लो, हार्ट खराब हुआ हार्ट बदलवा लो, लिवर खराब हुआ लिवर बदलवा लो, क्योंकि वो ठीक ही नहीं कर सकते। भाई इतनी सी बात, सिंपल सी बात है ना। बदलवाने का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ठीक ही नहीं कर सकते। तो ठीक कौन कर सकता है? कोई भी डॉक्टर, कोई भी दुनिया का वैद्य भी हो, वो भी ठीक नहीं कर पाएगा। कौन ठीक करेगा? आपका शरीर ठीक करेगा, आपका शरीर ठीक करेगा। लाखों सालों से मानव शरीर को, ह्यूमन बॉडी नेवर हैड दिस काइंड ऑफ डिजीज, इट्स अ सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम। आपने सिविलाइजेशन क्रिएट कर दिया तभी बीमारी बन गई। आप संस्कृति बना के रखते तो कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन आपने संस्कृति को नहीं चूज किया, आपने सिविलाइजेशन को चूज किया। तो रेस्पॉन्डिंग टू ट्रिगर, प्रॉपर रिस्पॉन्स टू ट्रिगर, इसी को हम धर्म कहते हैं। आपको शब्द भी नहीं मालूम, धर्म किसे कहते हैं? प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ ट्रिगर को हम धर्म कहते हैं, इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ ट्रिगर को हम अधर्म कहते हैं। सभी अधर्म हो गए तो अधर्म का मतलब ही बीमारी होती है। तो संस्कृति चूज करते तो ये बीमारी नहीं होती, हमने सिविलाइजेशन चूज किया, ये प्रॉब्लम है। अभी क्या करना है? लिवर को स्ट्रांग कर सकते हैं क्या? क्या लिवर को स्ट्रांग कर सकते हैं? क्या किडनी को स्ट्रांग कर सकते हैं? सवाल तो ये पूछना चाहिए ना, सवाल यही पूछिए, हर जगह यही पूछिए, लिवर को बताओ कैसे स्ट्रांग कर। बाहर से नहीं, बाहर से खा के लिवर स्ट्रांग होगा फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि आपकी शक्तियां खराब हो गई हैं। वो आपका शरीर आप खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो ये ट्रिगर, जब हम खराब ट्रिगर दे रहे हैं तो ये खराब हो रहा है, सही ट्रिगर देंगे तो उसको सही होगा। तो लिवर तक ट्रिगर कैसे पहुंचाएं? हाँ, कोई भी शक्ति आपके अंदर, कोई भी स्ट्रेंथ आप जनरेट करते हैं, तो उसके लिए करते क्या है? थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, हाथों को ऐसे फंसा दो, फंसाओ जरा हाथों को, जस्ट क्लास्प योर फिंगर्स, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो ना, समझ में आए। एंड पुल, खींचिए, खींच के रोकिए, देखिए पीछे सांस रोक रखा, पुश करें ऐसे करके, देखिए सांस रोकते हैं। आपको जंप करना है, कैसे जंप करेंगे? सांस रोकना पड़ेगा। किसी को बोलिए आप धक्का देने को अपने आप को, आप संभालेंगे तो कैसे संभालते हैं अपने आप को? सांस रोक के एक टांग पे खड़े हो जाइए। बैलेंस कैसे बनाते हैं? सांस रोक के। वेट उठाना है तो वेट कैसे उठाते हैं? ज्यादा वेट उठाना है तो सांस रोक के। तो आपका स्ट्रेंथ गिविंग ट्रिगर, बैलेंस मेंटेनिंग ट्रिगर, अगर आपको सीढ़ियां चढ़नी है, चलना है, डांस करना है, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, कुछ भी करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो देयर इज अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड व्हिच गोज ऑन, थ्रू व्हिच यू आर एबल टू डू दैट एक्टिविटी। आपके अंदर
अलग अलग अनुपात में सांस रोक के उसको कंडक्ट करते हैं, उसको आप कर पाते हैं। तो ये एक्शन का स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम, रिदम बता दिया, चलना, डांस करना, ये रिदम हो गया। लय हो गया, लय क्रिएट करना सांस रोक के होता है, बैलेंस क्रिएट करना सांस रोक के होता है, स्ट्रेंथ क्रिएट करना सांस रोक के होता है। अगर इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से, एक बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से आप करेंगे ना, तो ये लिवर को जाएगा। जैसे अगर 5 सेकंड का 1 यूनिट मानते हैं, 5 सेकंड का 1 यूनिट, ध्यान से सुनिए, 5 सेकंड का 1 यूनिट, 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन, 4 यूनिट का एक्सहेलेशन, तो लिवर की तरफ में ये ट्रिगर चला जाता है। 4 यूनिट का इनहेलेशन, 2 यूनिट का होल्ड, 1 यूनिट का एक्सहेलेशन, किडनी की तरफ में ट्रिगर चला जाता है। तो आपने गलत ट्रिगर दिया, शरीर खराब हो गया, आप सही ट्रिगर दीजिए, है ना, तो घुटने नहीं बदलवा के आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होने वाली। भाई आप ऑपरेशन करवा देंगे एक कंधे का, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवा देंगे, प्रॉब्लम कहां सॉल्व किया आपने? जो आपके लिवर कमजोर है, हार्ट कमजोर है, जो आपके अलग अलग अग्नियां कमजोर हैं, भूख खराब हो गई है, प्यास खराब हो गई है, हार्मोन का इंबैलेंस आ गया है, इच्छा नहीं हो रही, अभी कुछ भी जीने की इच्छा नहीं होती, खुशी नहीं हो रही, या अग्नियां हैं, ये अग्नि खराब है आपके शरीर की, इसको बढ़ाना तो पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव तो करना पड़ेगा, है ना। घुटने बदलवा के तो काम नहीं चलने वाला, या ऑपरेशन करा के तो काम नहीं चलने वाला। बहुत मुश्किल आ गई, उस समय करवाया जा सकता है। सर्जरी जो है वो बहुत कंडीशनल है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी में ही होना चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट तो कीजिए। आप सर्जरी करवा लो, चलो बहुत ज्यादा दर्द होगा, आपने दर्द की दवाई खा ली, मगर वो ट्रीटमेंट तो नहीं है। भाई दर्द हो रहा है, आपने दर्द बता रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, आपने दर्द का सिस्टम ही काट दिया, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन तकलीफ हो रही है तो चलो एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, मगर ट्रीटमेंट तो करो, जो प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व करो, लिवर को तो स्ट्रांग करो, मेटाबॉलिज्म को तो स्ट्रांग करो। इसके बगैर ट्रीटमेंट तो कोई कर ही नहीं रहा। आप जो दवाइयां खा रहे हैं उसमें ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सपोज करो रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कई लोगों को होगा रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? तो आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है ना, आपको समझ में आएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। जब आप रिस्क क्रिएट करते हैं अपने शरीर के लिए, खतरा बनाते हैं, खतरा बनाते हैं ना, जब खतरा बनाते हैं तो आपका शरीर खतरे से हैंडल करने के सारे कार्यक्रम करता है। आप भी वैसे ही करेंगे ना। अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आती है तो आप खाने पीना भूल जाते हैं, जो टाइम पे खाना पीना वो भूल जाते हैं, आप इमरजेंसी को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। तो आपका शरीर भी वही काम करता, जब खतरा आता है तो इमरजेंसी को हैंडल करता, तो उसके नॉर्मल तो प्रोसेस होता ही नहीं। अब जरा ध्यान दें, अगर हम लगातार खतरा क्रिएट करेंगे तो हमारे शरीर में 2 तरीके के सरकार है। जैसे सरकार है ना हमारे देश में, आज गणतंत्र दिवस है, ठीक है, तो हमारी सेना का मुख्य अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है सेना? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। प्रेसिडेंट कब हेड बन जाएगा? जब लड़ाई होगी, जब लड़ाई होगी तो प्रेसिडेंट हेड, प्राइम मिनिस्टर सब नीचे। लेकिन पीस टाइम है, कोई लड़ाई नहीं हो रही, तो प्राइम मिनिस्टर हेड, घर में वही होता। एक फीमेल रूल करती है घर को जब पीस टाइम है, और मेल कब आएगा आगे? जब खतरा आ गया। तो आपके शरीर में 2 ग्लैंड हैं, एक को कहते हैं थायराइड, एक को कहते हैं एड्रीनल। गले के पास थायराइड होता है, किडनी के ऊपर एड्रीनल होता है। एड्रीनल ग्लैंड प्रेसिडेंट है, थायराइड प्राइम मिनिस्टर है। खतरा आएगा तो एड्रीनल ओवर एक्टिविटी होगी, यानी खतरे को बचाने के लिए एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगा? ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, शुगर बढ़ाएगा आपके बॉडी में, और थायराइड को कम करेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, हाइपोथायराइडिज्म कितना बढ़ रहा है दुनिया में। बच्चियों को भी शुरू हो गया, 13-14 साल की बच्चियों। डायबिटीज कितनी बढ़ रही है, बच्चों को डायबिटीज हो रही है। क्यों हो रहा? रिस्क आपने बना दिया अपने शरीर में। अब आपका शरीर केवल रिस्क से हैंडल कर रहा है, रिस्क को
है ना। और वो भी आप नहीं करने देते, वो भी आप क्या कर रहे हैं, उसको बोलेंगे नहीं नहीं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान मैं। ये फिरंगी सोच ना इतनी खराब है, इन्होंने दुनिया को खत्म कर देना। तो फीवर क्रिएट करता है ना, कोरोना हुआ होगा आपको, कोरोना को मारने के लिए आपका शरीर टेम्परेचर बढ़ाएगा, 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोना मर जाएगा, मगर आप नहीं बढ़ने देंगे, आप नहीं मारने देंगे कोरोना को। क्या करेंगे आप, एक पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन ऐसी गोली खा के फीवर को कम करेंगे। 10 कराएगा 10 नहीं करने देंगे, उल्टी करेगा उल्टी नहीं करने देंगे। लिवर को इन्फ्लेमेशन हो गया बेचारा, आप नाखून से अपने स्किन को ऐसे खरोंच दो, जलन होगी ना, थोड़ा घी लगाओ, आराम मिल जाएगा। अब बेचारा लिवर कैसे आराम देगा, वो भी थोड़ा घी फैट क्रिएट करेगा। आप क्या बोलोगे, गलत कर दिया, फैटी लीवर। आपका पूरा बॉडी स्ट्रेस में है, तो स्ट्रेस को बचाने के लिए कॉर्टिसोल एक हार्मोन बनाना पड़ता है आपके शरीर। वो कैसे बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, रॉ मटेरियल उसी से बनाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा, आप वो भी नहीं बढ़ाने दोगे। आपने अपने शरीर को क्रिमिनल क्यों बना दिया, ये तो बताइए। अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटी को ट्रीटमेंट बोलने लग जाएंगे, अब बताइए कौन बचाएगा। आप क्रिमिनल एक्टिविटी को साइंस बोलने लग जाएंगे, अब कौन बचाएगा। तो कितनी बीमारियां बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़े जा रही है, एपिडेमिक प्रोपोर्शन में बढ़ रही, क्योंकि आपने क्रिमिनल एक्टिविटी को साइंस बोला, ट्रीटमेंट बोला। यही शरीर के साथ में आपने किया, अच्छे के लिए इसको खत्म कर दिया, अच्छे के नाम पे खत्म। तो ऐसा ना करें, ऐसा करना कम करें। कौन बचाएगा, आपका शरीर बचाए। अगर आपका शरीर रेजिलिएंट है, इतने खतरनाक सिचुएशन के बावजूद भी अगर आपकी रेजिलियंस है, सहन शक्ति है आपके शरीर की, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, रिकवरी स्ट्रेंथ अच्छा है, तो आपका शरीर बचा लेगा। वरना कल को आपको क्रैश होगा, आपके ट्रीटमेंट की वजह से क्रैश होगा, आपकी ट्रीटमेंट की वजह से क्रैश होगा। कौन जिम्मेदारी लेगा, आपके घर वाले जो आपको बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, या आपका डॉक्टर, नहीं उसको तो कानून ने प्रोटेक्ट कर रखा है, या आपकी सरकार, बिल्कुल भी नहीं। वो तो दुनिया में जो चल रहा है उसी को फॉलो कर रही है, अच्छाई के लिए काम कर रही है, मगर अच्छाई के लिए खतरनाक काम कर रही है। WHO बचाएगा, जिसको आप समझते हैं कि बहुत ज्ञानी है, या अमेरिका बहादुर बचाएगा। हर एक गोली खाते हैं तो अमेरिका को कट जाता है, उसका पैसा मिलता है उसको, उससे वो हथियार बनाता है, दुनिया पे चौधरी बना करता है। कौन बचाएगा आपको, आपका शरीर बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। तो शरीर की ये जो शक्तियां कमजोर हो गई हैं, ये जो रिकवरी फैक्टर कमजोर हो गया, ये जो रीजनरेशन कमजोर हो गया है ना। लगातार अगर आपके शरीर पे स्ट्रेस है तो आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश करता है, मगर देखता है क्या करें। अरे शेर आता तो कम से कम लड़ते या भागते, मगर ये तो लगातार स्ट्रेस है, तो ये हमेशा बचाने की कोशिश करता है। फिर आपके शरीर कहता है कि अरे इस इमरजेंसी तो लग नहीं रहा, कम हो जाओ, नीचे आ जाओ। फिर ये उठता है, फिर नीचे। ये इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और ऊपर से आप गोलियां खा के उसको दबा देते हैं, स्टेरॉइड खा के उसको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। सिंपल शब्दों में अपने शरीर का रेप करना छोड़िए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, इसकी जो रिकवरी स्ट्रेंथ है वो बढ़ाना पड़ेगा। लिवर को स्ट्रांग करना पड़ेगा, हार्ट को स्ट्रांग करना पड़ेगा, हाँ, किडनीज को स्ट्रांग करना पड़ेगा। यही कुंभक थेरेपी है। पहले हम आपको डायग्नोस करते हैं, आपके अंदर देखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने बोलते हैं, कहते हैं सांसों के जरिए एक्सपेरिमेंट करो, कितनी लंबी सांस खींच सकते हो, कितना रोक सकते हो, कितना छोड़ सकते हो, उसके बाद कितना रोक सकते हो, ये आपसे पूछते हैं। कहते कितना आप बैठने में तकलीफ होती है क्या, हाथ उठाने में तकलीफ होती है क्या, तो हम आपको एक्सपेरिमेंट करने बोलते हैं आपसे, आपके साथ में। वो फिर आप हमें फॉर्म में भर के भेजते हैं, उससे हमें पता चल जाता है अरे ये चीज कमजोर है इनसे, अरे वो चीज कमजोर है। तो आपके पूरे मॉड्यूल को हम आपके हिसाब से फाइन ट्यून कर देते हैं कि वो जो कमजोर पक्ष है ना, उस पर ज्यादा उसको स्ट्रांग किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, उस तरफ में काम किया जाए। तो ये कस्टमाइज थेरेपी, प्राण शक्ति डायग्नोसिस,
वो करने के बाद में आपको सिखाया जो जाता है, 3 चीजें सिखाई जाती हैं, अंग न्यास, मर्म विन्यास और हठ विन्यास, तीसरा कुंभक थेरेपी। ये 3 चीज सिखाई जाती है आपको। इसके अंदर और भी अलग 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 मेथड्स हैं, उन सबको कस्टमाइज किया जाता है आपके हिसाब से। तो जैसे ही आपका लिवर स्ट्रांग होना शुरू होता है, आपके इन्फ्लेमेशन कम होने शुरू होते हैं, जैसे ही आपके किडनी स्ट्रांग होता है, वो टॉक्सिन को निकालता है ज्यादा, तो आपका आइटिस जिसे आप कह रहे हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ, आपके शरीर में 3 तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, वो हम करते हैं। नाभि, कौड़ी, नले, नाभि का अलाइनमेंट करते हैं, आपके चेस्ट का अलाइनमेंट करते हैं, और आपके पूरे स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है, ये 3 अलाइनमेंट करते हैं। फिर आपको हल्का फील होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। कुंभक के 1 हफ्ते के अंदर ही करते करते 1 हफ्ते के अंदर लोग कहते हैं हमें अंदर से ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, हम ज्यादा काम कर पाते हैं, हम थक नहीं रहे अभी। तो यही एनर्जी आपको फिर रिकवर ठीक भी करेगी, यही एनर्जी हम बढ़ाते हैं, इसी एनर्जी को हम आयुष कहते हैं, है ना। अलाइवनेस, आपकी जीवंतता को आयुष कहा जाता है संस्कृत में, और जीवंतता बढ़ाने को आयुर्वेद कहा जाता है। जड़ी बूटियां तो 1 से 2% ही है आयुर्वेद में। वी हैव लॉस्ट द साइंस ऑफ आयुर्वेद। तो आपका शरीर कैसे ठीक करेगा? जीवंतता। एक छोटे बच्चे को देखिए कितना जीवंत होता है, तभी इसलिए रिकवरी जल्दी होती है उसके अंदर, ठीक जल्दी होती है कोई चीज। एक बूढ़े इंसान में जीवंतता कम हो जाती है। कुंभक एक चीज है, जीवंतता एकदम से बढ़ाना शुरू करेगा, जिससे आपके रिकवरी फैक्टर्स इंप्रूव होते जाएंगे। नंबर गेम में नहीं फंसे तो आप देखेंगे चोट लगी तो ठीक हो जाएगा जल्दी, जो कि कुंभक कर। हार्ट अटैक हुआ, उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक भी हो जाएगा। तो जो कुंभक कर रहा है वो शरीर को स्ट्रेंथ दे रहा है, तो उसके रिकवरी फैक्टर्स बहुत जल्द स्ट्रांग हो जाएंगे। वो बाद में चल के उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मृत्यु शैया जो होगी वो वेंटिलेटर नहीं होगा कम से कम। ये बहुत जरूरी है, जब तक जिए इंडिपेंडेंट रहें, किसी के भरोसे ना रहें, और अपने शरीर को सशक्त करें। ठीक है, कुंभक केवल शरीर पे काम नहीं करेगा, जिसे आप माइंड कहते हैं, वैसे माइंड जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि ये भी मनोमय कोश कहते हैं इसको हम। आपके मेंटल जितने भी इश्यूज है ना, 100% रिवर्स हो जाए। कोई दवाई नहीं है, किसी भी स्ट्रेस के लिए भी दवाई नहीं है कोई। आपको लगता है कि कोई दवाई है नहीं, कोई भी मेंटल इश्यूज के लिए कोई दवाई नहीं है। कुंभक आपके जितने भी मेंटल इश्यूज जो हैं, जो आप जानते हैं, जो आप नहीं जानते, वो सारे के सारे रिवर्स करते हैं। ठीक है, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव भी बता दिया, क्योंकि आप एक एक सवाल, छोटे छोटे सवाल पूछेंगे मुझसे। मैंने आपको एक पूरा बता दिया कि ये कैसे होता है। ठीक है, हाँ जी बोलो। Okay, Ritu Walia ma'am talks about right side hip joint problem. I can't fold my legs and sit on the floor. ओके, यू कांट फोल्ड योर लेग्स। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी कहीं पे वेयर एंड टेयर होता, मतलब किसी तरीके की इंजरी जैसी होती है ना, उस जगह को हिलाना बॉडी जो है रोक देता, क्योंकि उससे वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि आपके शरीर में अगर ये स्ट्रेंथ कम है तो चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक ऑर्गन को, हर एक मसल को, हर एक बोन को, हर एक नर्वस सिस्टम को हमेशा रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है, यानी उसमें सेल मरते हैं और नए बनते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब है तो नए नहीं बनेंगे, खराब हो जाएंगे, सेल मर जाएंगे, लेकिन नए बनने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो शरीर ये प्रोटेक्शन कर देता है, कहता है कि ज्यादा मत खिलाओ। अब एक एक्सपेरिमेंट करने को मैं आपको बोलूंगा, और ये मैंने बहुत लोगों को बोला है, और ये सभी जितने भी कुंभक करते हैं उनका एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी एक हठ योगी रहा हूं। हठ योगी का मतलब होता है जैसे आप योग आसना करते हैं, कहते हैं आजकल, तो वो हठ योग का हिस्सा है, और उसमें आप अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं टू ब्रेक सर्टन बैरियर्स और टू कम आउट ऑफ सर्टन लिमिटेशन से निकलने के लिए अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं। आप अपने कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करते हैं यूजिंग योर बॉडी, दैट इज हठ योगा।
तो आई हैव टोल्ड मेनी पीपल कि एक काम करो, अपने सिर को खड़े होके अपने सिर को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करो, सी वेयर यू रीच, कहां पे पहुंचते हैं वो देखिए। एंड व्हाट यू डू, यू होल्ड योर ब्रेथ फॉर वट एवर योर कैपेसिटी, आप जितनी कैपेसिटी है आपकी उतने सांस रोकिए, सांस लेके रोकिए और आराम से छोड़ दीजिए, और ये बार बार करिए थोड़ी देर तक, 10 मिनट करो उसको। 10 मिनट करने के बाद में यू अगेन स्टैंड अप और ट्राई टू टच द नीज विथ योर हेड, सिर से अपने घुटने को टच करने की कोशिश कीजिए, सी वेयर यू रीच, और देखिए कहां पहुंचते हैं। केवल 10 मिनट के अंदर आप ज्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे, नजदीक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके जितने भी जॉइंट्स थे वो थोड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल हो और आप अभी तकलीफ नहीं हो। दूसरी चीज क्या देखेंगे आप, जब भी आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक हीट नहीं है, जठराग्नि कहते हैं हम, है ना, एक अम्ब्रेला है जिसे हम गारे पत्ते अग्नि कहते हैं। 12 तरीके की अग्नियां होती है आपके शरीर में, उसमें से एक जो है उसे गारे पत्ते अग्नि कहते हैं, और जो आपका पाचन की अग्नि है उसे जठराग्नि कहते हैं, जो डाइजेस्टिव फायर। एक चीज आप देखेंगे, कुंभक जो भी कर रहा होगा ना उसकी जठराग्नि बढ़ जाती है। केवल जठराग्नि नहीं बढ़ती, पूरी की पूरी गारे पत्ते अग्नि, किसी भी तरीके की फायर आपके शरीर के अंदर बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, उनकी प्यास अच्छी हो जाती है, उनको इच्छा होती है काम करने की, उनके अंदर खुशी होती है, नेचुरली एनर्जी खूब होता है भरा। तो ये सारी अग्नियां बढ़ जाती है। ये जैसे ही अग्नियां बढ़ेगी ना, आपके जॉइंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। दूसरा, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा। तो 2-3 चीजें बताई, इसके बारे में मैं दिन भर बात कर सकता हूं, आपको 1000 तरीके से इसको समझा सकता हूं, मगर क्या है कि गूगल भी आप सारा दिमाग में भर लेंगे ना तो आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली, आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। कितने भी ज्ञानी हो जाइए, जितने ज्ञानी लोग हैं ज्यादा बीमार है। तो ये ज्ञान से बीमारी नहीं होती, आपके शरीर की तरफ में काम करना पड़ेगा। तो मैं कितनी भी बातें बता दूं, आप तो यूट्यूब में देखो, जाके फेसबुक में देखो, ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है, मगर फिर भी दुनिया तो हेल्दी नहीं हो रही। तो ये ज्ञान काम नहीं करता, कुछ प्रैक्टिकल चीज काम करती है, और सही काम करेंगे तभी सही काम होगा। भोजन अच्छा कर देंगे तो आप बीमारी से निकल जाएंगे क्या? तो आपको ऐसे समझिए कि भोजन अच्छा कर देंगे तो मैराथन दौड़ जाएंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी शक्तियां थोड़ी वापस आएंगी, भोजन को पचाने में आपके शरीर की शक्ति लगती है। ठीक है, भोजन अच्छा करना अच्छी बात है, मगर उससे आपका रिवर्सल नहीं होगा। कुछ आराम मिल सकता है, आपकी शक्तियां नहीं बढ़ेंगी। ठीक है ना? तो मेडिसिन खा के, दवाई खा के क्या आप ठीक होंगे? कभी नहीं, अब और खराब होते जाए। एक प्रॉब्लम आएगी, फिर दूसरी आएगी, दूसरे के लिए और दवाई बन जाएगी, फिर और खराबी हो जाएगी आपको। आज तक तो सॉल्व नहीं हुआ ये प्रॉब्लम, आज कैसे हो जाएगा? पिछले 100 साल में तो सोल्यूशन नहीं मिला, तो किसका वेट कर रहे हैं? अगले 10 साल में मिल जाएगा, 20 साल में मिल जाएगा, उसके बाद तो हम ही निकल लेंगे। तो आज से आपको अपने शरीर के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। आप ये मानिए कि आपकी लाइफ कैसी होगी वो डिसाइड करेगा आपकी बॉडी कैसी है। You work towards the body, support your body to recover, increase the recovery factor of your body, increase the strength factors of your body, increase the functional factors of your body, increase the organ strength. तब आप देखेंगे in a comprehensive manner, and then you will see, you will be able to come out of the problem. बहुत आसानी से मैंने बता दिया कि अगर आप बैठ नहीं पाते, जस्ट कुंभक करेंगे आप बैठने लग जाएंगे, सिंपल सी बात। ऐसे बहुत, एक नहीं सैकड़ों हजारों आजकल एग्जाम्पल हमारे पास में है। हाँ जी, नेक्स्ट। Okay, Karti Hari Chelvi sir, leg numbness and tingling on one side. तो टिंगलिंग, नमनेस, दो चीजें हैं, ठीक है ना? ये दो चीजें कैसे फील होती हैं? दो चीजें, इसके लिए मैं दो कारण बता रहा हूं, दो रीजन बता रहा हूं। तो किसी ने और भी पूछा था, पैरालिसिस, हमारे पास में पैरालिटिक अटैक वाले लोग आते हैं, दे रीगेन देयर सेंसेशन बाय ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 95%, 95% से भी ज्यादा उनके सेंसेशन रिगेन हो जाते हैं। ठीक है ना? हमारे पास ऐसे केसेस हैं। तो दो चीजें, एक चीज है न्यूरो डीजेनरेशन, नसों का डीजेनरेशन होना। तो आपके अगर शरीर में कार्य प्रणाली यानी फंक्शनल एबिलिटी अगर ठीक नहीं है तो डीजेनरेशन ही होता है। केवल नसों का ही नहीं होता, हर एक ऑर्गन का होता। किडनी खराब हो रहे हैं ना, डायलिसिस सेंटर कितने खुल रहे हैं, आप केवल जरा नंबर्स को देखिए,
इंडिया में केवल डायलिसिस सेंटर नए कितने खुले हैं, तो आपको पता चल जाएगा किडनी इश्यूज कितने बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आप केवल नंबर देखना शुरू, आईवीएफ सेंटर टाइप करो कि कितने खुल गए पिछले 1 साल के अंदर, तो पता चलेगा इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ रही है। अब न्यूरो डीजेनरेशन को क्या हम रोक सकते हैं? क्या कोई भी दवाई है जो कि न्यूरो को, नर्वस सिस्टम को रीजनरेट कर सकती है? कोई दवाई नहीं है। अगर कोई दवाई काम ऐसी कोशिश भी करेगी तो वो जो रीजनरेशन होगा ना, डिविएटेड होगा, डिविएटेड होगा, यानी आपकी जेनेटिक्स खराब हो जाएगी। तो एक बात बताइए, ह्यूमन जीनोम, हम म्यूटेंट्स हो गए, आपने देखा ऐसा? हैव यू सीन? अच्छा, इंग्लिश में बोलना है। Okay, okay, okay. I'll speak a little English because he can't understand. So what I am saying is, in neuro, is there any medicine which can actually regenerate your nervous system? Is there a regenerative medicine pertaining to your nervous system? No, not at all. If you try to regenerate your nervous system, your genetics, your genome will get deviated. So we have already made ourselves into mutants. We have converted this humanity into mutants, but not those strong mutants that you see in Hollywood movies, X-Men, जैसे में आप, है ना, you see special powers of those mutants. No, we are weak mutants. Our heart cannot function. Our liver cannot function. Our kidneys cannot function. We have made ourselves into mutants, and that too weak mutants. Now, what is the solution of this? What is the solution? Can you find a solution through some kind of medicine? Not at all. Whatever has destroyed you can't create a solution. So if you wait for eons for some medicine to come and solve your problem, forget about solving your problem. Never. In fact, you will weaken the whole next generation. आगे की generation को हम खराब कर देंगे. So how the regeneration can happen? How the regeneration can happen? So giving you simple examples. When you get neurodegeneration, what happens? The control over a limb becomes less. हाथों पे कंट्रोल कम हो गया, पांव पे कंट्रोल कम हो गया, है ना? Even you are not able to use it the way you want to use it. So in a simple manner, how do you control your limb? Just tense your one hand. All the tense your fingers of one hand. एक हाथ की उंगलियों को टाइट कीजिए. Tense it really tight. See, you hold your breath to tense your hand. या आप सांस रोकना पड़ता. So how do you control your limbs? By holding your breath in variable proportion. First thing, if you are not able to control your limbs, it can be any other problem. Neurodegeneration happens in many problems, and you name it by a certain name. These Western people just know naming something, naming a problem. They can't correct it. Parkinson, for example. Is there a treatment for Parkinson? No. Neurodegeneration, no treatment. So they'll name it by some name, but there is no solution. So to have control, for example, paralysis, you lost sensation. How to bring it back? I said, using Kumbhak, you can bring back the sensation. So first of all, you can bring back your control over your limbs by doing Kumbhak. This is first example. Second example, regeneration. For regeneration, the more you inhale, not consciously, but because of a ecosystem, if your inhalation is proper, then the regeneration factor in the body will be proper. So because we have destroyed the whole ecosystem, are you inhaling more? Are you inhaling properly? No, you are not inhaling properly. I am trying to relate this inhalation with the regeneration factor of your body. The strength of pulling in air or inhalation has become weak in the whole of humanity. So that is one kind of Kumbhak. The strength, whenever you say strength, that is Kumbhak of inhalation. So do you want to regenerate your nervous system? Is there any other solution? No, there is no solution. You will have to regenerate and you will have to do Kumbhak. Second thing. Third thing, when
every kind of a nerve actually protrudes, come out of your spinal cord. So spinal cord actually throws out different kinds of nerve towards your limbs and organs. So when your spinal strength is not proper, what will happen? So what you can do is take 33 flat stones. Chapte patthar 33 ले लीजिए. Drill hole in between and put a rope in between and pull the rope. What will happen? All the stones will become aligned, come in alignment. The moment you loosen the pull, what will happen? Every stone will try to slide away from the other stone. This is what is happening in your spinal cord. What you call a slip disc. What you call a slip disc. What is slip disc? You must understand the strength of this tension of the spinal cord. This is called as Vyana. The proper tension in the spinal cord has become weak. By operating, will you bring the tension back? Or do you bring the tension back? No. By doing some surgery, you just try to pull the thing to right place. That's it. But it will not stay in the right place. ठीक है ना? L4 खराब हो गया. L4 को ऑपरेट करो, L3 खराब हो जाए. One shoulder you go and do operation upon, another shoulder will create problem. So is surgery a treatment? Surgery is not a treatment. It is just a little management of the problem area. But what is the treatment? If you can increase this Vyana, if you increase the skeletal integrity of your body, how can you increase the skeletal integrity of your body? The Vyana is called as, I am just defining Vyana, inhalation, proper inhalation, maximum hold, and after that if you can exhale easily, that strength is called as Vyana. Right? Once again I'll say, what is Vyana? What is the structural strength of your body? Structural strength is if you can inhale appropriately, hold maximum, and exhale easy after that. If you are able to do that, then you have strong Vyana. So we teach three basic modules, as I said, Anganyasa, Hatha Vinyasa, Kumbhak therapy. In Kumbhak therapy, again, there are three things which you are taught. The third part is called as Vyana, Kriya, Kumbhak. We want to enhance your structural integrity. Once your structural integrity is enhanced, then the nerve which is getting compressed between two spinal bones, it will open up. It will open up. And the tingling sensation. Why tingling sensation? Because there is somewhere it is getting compressed. Kahin pe wo dab raha hai. So three things already I have said. Nabhi, Kaudi, Nale. Three alignments we do. But we also increase the structural strength of your body. That's how you can come out of that problem. Surgery is not a solution for it. It can be a little management when things go really south, really wrong. At that time, surgery can be done, but at least do your treatment. Right? Next question. Sadhna ma'am writes about paralytic attack in 2005 and 12. At present, 70% is working and is deteriorating as days are passing by. Yes, it will deteriorate only because you are not treating yourself. You are not regaining the sensation or not doing anything through which your body regains the lost aspect of itself. So what you do, अभी तो बताया paralysis में लोगों के वापस आ जाते हैं. तो please work upon your body. Join the program. Next. Okay. Anybody from the participants who would like to ask their question can please unmute themselves. Somebody Ruchika ma'am wants to know about sleep. She's been taking psychiatric medicine, so sleep has been disturbed for many years. So can it be resolved? So Swamiji, please talk about sleep. I already said that any kind of see, first of all, sleep. Why? So let's understand sleep.
everybody here can understand, easily can understand. You are Indians. Indians can understand. Nobody else in the world. But you have given the thekedari of health to West. That is the wrong thing. So what is sleep? For sleeping, at the time of sleep, what do? You drop your body, you leave your body, isn't it? So when you are going in a vehicle, for example, a bus, and you are holding the rod which is there, for you are standing and holding a rod. Now, when the bus goes through a very very, very difficult terrain, ubad-khabad jagah pe bus jaate. So you hold the rod tight or you loose, or hold it very relaxed or loose. You hold it tight. आप जो वो खंबा है उसको ज्यादा जोर से पकड़ते हैं ना जब वो बस उबड़-खाबड़ जगह में जाती है ना? When you are not balanced, when you are at risk, you hold your body tight, isn't it? And at that time, will you leave your body? Will you drop your body? No, there is too much of risk. There is too much of risk. So when you create a lot of risk within the body, so you will not be able to drop it when it is required. When you are supposed to sleep off, drop your body, you are not able to drop because you feel too much of a risk in dropping your body. So first thing first, right? The second thing. Now, another part with which I am just correlating things. When your systemic rhythm, see, three things you must understand. Your body works on three principles: rhythm, balance, and strength, that I already explored a little time back. So rhythm, balance, and strength. This is what we call as bhava, raga, tala. Bhava, raga, tala. Bharat. Bharat. Name of your country means health. Do you know this? But you have made it into India, which doesn't mean anything. You made Bharat into India. You made health into disease. So rhythm of your body is something that needs to be established, back to health, back to right kind of rhythm. And this rhythm just gets reflected in your breath. The rhythm of your body gets reflected in your breath. So if your breathing is not rhythmic, then your body doesn't feel at ease. It is always at risk. How you can bring back this, how you can sleep better, I'll give you a very practical example. If you just try to strengthen or take control of exhalation, exhalation will be easy only when your rhythm is okay. The rhythm of the body is okay. At that time, your exhalation will be very easy and long. Ideally, your exhalation has to be twice your inhalation. Ideally, your exhalation has to be twice your inhalation. But if you check, exhalation is not in your control. What that means also is that any kind of functioning of your body is not strong or not proper. There is too much risk in your body. So you can also observe this fact when you move from a difficult zone to a very easy zone. Like, for example, when you go for holidays, try to go to a very natural environment and observe your exhalation in wherever you live in a city and your exhalation in a natural environment. What you'll see in a natural environment, you'll suddenly feel a little easy and calm within yourself, because if you observe, your exhalation will become a little easy. Right? So, lot of correlation. But what has happened, as I said, just try to connect everything from the beginning. We will share this webinar recording. And I'm just throwing out all the information. Maybe you'll not be able to catch in one go. So try to hear it back. I've actually explored everything. So if the breath rhythm is not proper, the rhythm in your body will not be proper. You will not be at ease,
and you'll not be able to drop yourself. Even your mind will be too much here and there, fluctuating. A fluctuating mind is risky mind. You'll not be able to drop this risk. So to sleep, you need to drop yourself a little. You need to practice death. Sleep is a small death, which will ultimately happen one day. A longer death will happen. But sleep is just a preparation towards a longer sleep. Right? If you fear death, will you ever be able to sleep? Not at all. So in India, 1,000 years back, every temple was a Shiva temple. Who is Shiva? He is the god of death. He is the god of death. So if you handle death properly, you can handle life. It's not the other way around. If you try to handle life, you will never be able to handle life. But if you handle death properly, you will be able to handle life. That is why in our culture, we always try to die in a particular situation. The science of death was too much explored, and it was very, very precise. That is why we were able to create potential human beings, a lot of divine entities. Still, we are doing it. A lot of divine entities in our culture, in our country. So if you bring back that rhythm, the bhava, it is also related with bhava, how you feel. If you bring back that rhythm, if you do kumbhak, the rhythm will come back. And we have n number of many examples where people were taking a lot of medication, and for the name's sake, what all kind of disease they have been told. Okay, bipolarity, schizophrenia, and whatnot. Sleep apnea is like something which is very, very common in today's time. Stress is something which we don't even say that there could be a person without this factor called stress. Just do kumbhak, bring back that rhythm of your body, and you will be able to sleep. कहते हैं ना घोड़े बेच के सोना. And many examples are there. They were taking a lot of medication. They have dropped their medication. They are sleeping like babies. Okay. Charu ma'am says my white cholesterol deposits around my eyes. Can it be cured? So in Ayurveda, there is a concept called of kapha, pitta, vata. Kapha basically means material. Now, you are intelligent people, and that is why I'm just exploring this factor. So everything that is material in your body, basically the primary form of material is called kapha. Even your food is kapha in its primary form. Now, what your body needs to do is convert that kapha into your bodily tissues. So this is called metabolism. It happens on 7 levels. So your body creates 7 different kinds of tissue. Rasa, Rakta, Mansa, Med, Asthi, Majja, Shukra. Now don't try to correlate with very physical tissues, but it is much more deeper in terms of understanding. If a little deeper understanding is needed, if you get into a little deeper into how this body forms, then only you will be able to decode it properly. Otherwise, you will just try to decode. You will say, Med is fat. No, Med is not fat. Med is connective tissue also. Med is elastic factor of your body also. So Med is shiny factor of your body also. But because allopathy also is taught like Ayurveda is also taught like allopathy. Allopathy has an impression over everything. It is so heavily marketed. So even Ayurvedic colleges are teaching things with a perspective of allopathy, which is like almost destroying Ayurveda. So kapha is primary raw material of your body. If you don't have that kind of energy through which you can convert this kapha into tissues, then this problem of deposition of kapha, white material, will happen. Not only this, weight gain is also an issue, which is because your body is not able to convert the kapha into
something else. It can also happen because your thyroid function is not proper. If your thyroid function is not proper, if there is too much risk in the body, then only your body will not be able to metabolize this factor, raw material, into your bodily tissues. Right? So where will it go? If you are not able to convert it into proper tissues, where will it go? It will deposit here and there. Wherever it will find a way, wherever it will find that to deposit at this site is easy, it will find a way there. So if the metabolism is not proper for a long period of time, and the person goes through a long period of constipation, what happens? You get into a disease where the kapha factor actually goes up. It can't go down, so it will go up and deposit somewhere. So either eyes or brain, even in your brain, it gets deposited. Right? You can name it anything. You can name it Parkinson. So this is Parkinson. Over a long period of time, if you are not able to convert this kapha factor into tissues, it will go up. In Ayurveda, it is called as Urdhva Gata Vayu, opposite movement. So when it is not going down, it will go opposite. It will become opposite movement, deposit upwards, even in your brain, and somebody will look at it and will call it Parkinson. But is there a treatment for Parkinson? No. But by using Kumbhak, you can create a downward pushing factor also. By using Kumbhak, you can increase the heat, the Pitta Paksha of your body, through which your metabolism will improve. And you'll see a lot of things like this deposition in your body, which is not required, will go off very easily. It's an easy thing to treat such things. But the way we are trying to understand a treatment or these things doesn't give any kind of treatment. Right? तो आपको इसको बहुत आसानी से देखिए कैसा है. आप थोड़ा सा हीट बढ़ा देंगे अपने शरीर का तो भी ये चला जाएगा. Next question. Okay, anybody from the participants? I can see 2 hands raised. Kavita ma'am, you can ask your question. I've unmuted you. And Vivo V2152, yes, you can ask your question. Madam, my son is having epilepsy problem. So whether it can be treated, cured? See, we don't take kids less than 16 years. एक मिनट ये बात मुझे ये पूरा करने दीजिए. Kavita ma'am, let's finish with this participant, then we'll continue with you. For 16 years and below, we don't take. We are starting a new program in next month for all those kids who are less than 16 years. And epilepsy, again, epilepsy is something where your body actually tightens itself. It holds itself tight at a certain period of time when it gets into risk. Whenever the epileptic trigger is around, at that time, when the epileptic episode happens, what happens? If you look at your kid, what the kid is doing or some person is doing is tensing the body tight. So it's the person is trying to protect itself from a risky trigger which has happened. And this is what I have been saying from the beginning, isn't it? We have created too much of a risk. And how the body will protect itself? By tensing tight, holding breath. Holding breath is a protective mechanism. Look at an epileptic episode, what the person is doing, holding breath. So if you strengthen the breath holding factor of the body or the strength of your body, this epileptic episode will come down drastically. And especially for kids, because the growth age of kid is 21 years and beyond. Some kid even take 24 years. So there is a possibility of complete recovery. Right? But Swami if you start... bol. I'm so sorry to interrupt you. Actually, his child is 29. That's what he was saying. 29 है तो पर epilepsy का हमने कोई special program नहीं शुरू किया. We have not started a special program for epilepsy. This program itself, you just put down your number. We will need a little bit information
of your kid, and how much weight and few things No, he is will 21 guide. years. He is 21 Huh? years. 21 years 21 old. years, He is. 21 years we can actually guide him to the right program. Only we'll need a little bit of information. We'll just need a little bit of information. Put down your number, Okay. and somebody will get in touch with you, and they'll pull out a Okay. little information about the person, about the kid, and then we'll direct the person to the right program. If it this program suits, then we'll tell you to join this program. But just put down your number. Somebody will get in touch with you. Okay, I already put my number also. हाँ जी, बोलिए कविता जी। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स, ये सारे प्रोग्राम के लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ। मेरे थर्ड ट्रायल के बाद मेरा ये नंबर लगा है इस बार। 2 बार में मिस हो गया था मुझसे प्रोग्राम। मेरा पूछना ये था कि मुझे काफी सालों से एंकल पेन है और ये मुझे हमारे एक्सीडेंट्स के बाद क्रिएट हुआ है। थोड़ा थोड़ा था, मैं जब डॉक्टर को कंप्लेन कर रही थी तो डॉक्टर बोलते हैं जिस पोर्शन पे आपको पेन है वहीं पे कुछ नहीं है, ऑपरेशन पे कुछ है तो बताओ। तो मैंने उसको इग्नोर किया। अभी काफी टाइम से 4 साल से मुझे बहुत मतलब अभी मैं स्टिक लेके चल रही हूँ और डॉक्टर बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है और न तो उसका कोई रिसर्च हुआ है। तो मैं थोड़ी मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो रखी हूँ, मुझे हिप में भी पेन है। तो ये प्रोग्राम से क्या मुझे रिसर्च तो देखिए बहुत डिबेटेड है, बहुत कुछ रिसर्च होना है, कुछ भी रिसर्च नहीं हुआ अभी। पहली बात मैं आपको बताऊं कौन से एंकल में है, राइट और लेफ्ट? लेफ्ट में है। लेफ्ट में और अब मेरा लेफ्ट टिबिया और फीमर ऑपरेट हुआ है। हाँ, मैं आपको उसके बाद मेरा पाँव थोड़ा सा क्रॉस बन रहा था, अभी थोड़ा सा हुआ है। मैं आपको सिंपल सा गरम कर सब्जी सॉल्यूशन तो मैं हाँ म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ, एक मिनट। स्वामी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको साफ साफ बता देता क्या है। जब भी ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने में क्या होता है कि सर्जरी जो है हमने ही इन्वेंट किया। हमारे देश में सर्जरी हुआ और सुश्रुत महर्षि सुश्रुत ने उसको कंपाइल किया था। जो आपके बच्चे अगर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे ना तो हिपोक्रेटिक ओथ लेंगे। वो जो हिपोक्रेटस था ना, वो इंडिया आके सुश्रुत महर्षि सुश्रुत की तीसरी जनरेशन से सर्जरी सीख के गया था। मगर सुश्रुत महर्षि सुश्रुत का ओथ कोई नहीं लेता, हिपोक्रेटस का ओथ लेता। जरा सोचिए कितनी विडंबना है। इसीलिए मैं आपको बोला भारतीय आप समझ पाएंगे, फिरंगी नहीं समझ सकते। वो सर्जरी ले तो गए मगर सर्जरी मर्मशास्त्र के ऊपर बेस्ड था। मर्मशास्त्र क्या होता है? आपके शरीर में कुछ एक ऐसी जगह होती है जो बाकी ऑर्गन्स को, टिश्यूज को फंक्शन करने का सेंटर होता है। तो सर्जरी के दौरान अगर आपको मर्म का ज्ञान है तो फिर आप उस जगह को कभी भी टच नहीं करते, काटते नहीं है, सुई नहीं चुभोते, ब्लेड नहीं डालते वहां पे। लेकिन सर्जरी सिंपल तरीके से ले जाने पे मर्मशास्त्र क्योंकि बहुत इवॉल्व होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए उसको समझने के लिए, तो हिपोक्रेटस मर्मशास्त्र तो समझ नहीं पाया, सिंपल सर्जरी ले गया। और आजकल यूरोप ने और उसके बाद उसके आगे के लोगों ने सर्जरी को अपना बना लिया, डाइजेस्ट कर लिया, बोला कि हमने किया सर्जरी। मगर मर्मशास्त्र तो वो जानते भी नहीं थे। और आज भी सर्जरी के जरिए जो डिफिकल्टीज आ रही हैं लोगों को, वो उनको भी नहीं पता चल रहा कि क्यों आ रही है। पहली बात तो हमारे इसमें शास्त्रों में हार्ट की सर्जरी कभी नहीं बताई गई। हार्ट को हमेशा रिकवर बड़े आसानी से किया जा सकता है, लेकिन हार्ट की सर्जरी करके उसको रिकवरी खत्म कर रहे हैं। उसकी वजह से हार्ट डिजीज इज बिकमिंग द नंबर 1 कॉज ऑफ। अभी अगर आप देखें बाकी सब बीमारियों को तो हार्ट डिजीज जो है नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग वे द सर्जरी वॉज कंडक्टेड। तो सर्जरी कंडक्ट जब किया जाता है तो क्या होता है कि किसी मर्म को अगर आपने काट दिया तो इधर कुछ ऐसे मर्म है जो कि इमीडिएटली डेथ भी हो सकती है लोगों की, और कुछ ऐसे मर्म हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ऐसे बहुत केसेस देखे गए हैं जो कि सर्जरी आज किया 5 साल के बाद में बहुत प्रॉब्लम आ गई और कोई भी कोरिलेट नहीं कर रहा कि सर्जरी की वजह से हुआ है।
घुटने के केसेस में आप देखेंगे, घुटने लोगों के अगर बदलवा दिए जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ज्यादातर केसेस ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और वो और भी तकलीफ आ जाती है उनको, क्योंकि ये मर्म के बारे में मालूम नहीं। तो सर्जरी में ये रिस्क हमेशा है आज के टाइम पे कि वो मर्म काट दिया या वहां पे कुछ पिन डाल दिया, वहां पे कुछ प्रॉब्लम कर दिया, आपने ठीक से उसको इकट्ठा नहीं किया तो वो खराब हो जाएगा। और वो इमीडिएटली दिखे चाहे नहीं दिखे, क्योंकि इमीडिएटली तो आपको खूब पेन किलर्स और स्टीरॉयड और ये वो डाल देते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दिखता है। पहली बात ये। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, जब भी सर्जरी करने के बाद में आप देखेंगे उस जगह पे, क्योंकि वहां पे आपने कुछ गड़बड़ी की है, तो उस जगह पे वायु प्रकोप होता है, इसे कहते हैं वायु प्रकोप। यहां वहां पे फ्लो रुक जाता है। तो आपका वायु अगर एंकल में रुक गया तो ये तो दिखेगा नहीं, स्कैन करा लो, कोई भी स्कैन करा लो, दिखेगा नहीं। कई लोगों को हील में पेन होता। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें होंगे कई लोग जिनको कि हील में पेन, एड़ी में दर्द होता, पांव जमीन पे भी नहीं रखा जाता, इतनी खतरनाक दर्द होता। आप स्कैन करा लो, कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वायु प्रकोप दिखेगा थोड़ी स्कैन में। तो अग्निकर्म इसका एक सिंपल इलाज है, अग्निकर्म। तो क्या अग्निकर्म आयुर्वेद में अग्निकर्म किया जाता है, मगर हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि जिनको तकलीफ है वहां तक ये प्रोसीजर हम पहुंचाएं। अग्निकर्म करेंगे तो ये चीज चली जाती है, ये वायु प्रकोप चला जाता है। ये मैंने खुद करके देखा है, ये चला जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को करना पड़ेगा। बात यह है कि कोई ऐसा हो जो वो जानता है, वो आपके पास आके या आप उसके पास में जाके वो कर सकते हैं। ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल ही नहीं। अब आगे हम इसको करना चाहते हैं। सो वी आर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जहां पे कि वी विल बी ट्रेनिंग पीपल इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और वो आपके घर में आके करवा जाएंगे, आपको ठीक करके जाएंगे। मगर अभी फिलहाल में नहीं कर सकते। अच्छा, एक पक्ष बता दिया कि इसका ट्रीटमेंट है, अग्निकर्म है, मगर वो अभी नहीं किया जा सकता। अगर आप ढूंढें थोड़ा कोई अग्निकर्म करता है तो उसके पास जाके करवा लीजिए, तो ये एक सोल्यूशन आपको मिल सकता है। दूसरी बात, ये अग्निकर्म करा लिया आपने, सपोज कीजिए, क्या ये वापस आ जाएगा? बिल्कुल वापस आ जाएगा, ये फिर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको उसका असली सोल्यूशन बता रहा हूं। तो वात प्रकोप हुआ, यानी कि वहां पे ऐसे मान के वात अटक जा रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है ना, फ्लो नहीं हो रहा। फ्लो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना? आपका किचन का सिंक ब्लॉक, क्या करेंगे? थोड़ा जोर लगाते हैं ना, थोड़ा जोर लगाते हैं उस एरिया में। अगर आप स्ट्रॉ से जूस पी रहे हैं और पल्प अटक गया, थोड़ा जोर लगाते हैं तो खुलेगा। ये जोर लगाना ही कुंभक है। तो अगर आप कुंभक करने लग जाएंगे तो एक चीज आप इंश्योर कर देंगे कि फ्लो को आप धीरे धीरे ठीक करने लग जाएंगे। उसके बाद आगे आने वाले टाइम में हम भी ये डेटा निकाल रहे हैं कहां पे कौन क्या कर सकता, या फिर हम आपको वैसे ही सिखा देंगे अग्निकर्म करना। पेन का हम एक छोटा प्रोग्राम भी करते हैं। वंस यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम यू विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अनदर प्रोग्राम, शॉर्टर प्रोग्राम, 3-3.5 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पे कि पेन को इमीडिएटली हैंडल करने के तरीके हम बताते हैं। ठीक है ना? तो इन a very near future we think we'll come up with comprehensive solution, but then you will have to do the treatment also. हाँ, ट्रीटमेंट तो करना शुरू करो उसको अरेस्ट करने के लिए इमीडिएटली, क्योंकि अलाइनमेंट का भी इशू होता है। कई बार क्या होता है, आपने सियाटिका को टच कर दिया, ऑपरेट करने में सियाटिका को आपने कट कर दिया या फिर खींच दिया या ऐसा कुछ डिसअलाइन कर दिया, तो सियाटिका तो अलाइनमेंट करना पड़ेगा ना आपको। उसके लिए तो कोई तरीका नहीं है। वो तरीका हमारे प्रोग्राम में है, जैसे मैंने बताया कि आपके बॉडी का अलाइनमेंट तो होता ही है। तो अगर ये सियाटिका का प्रॉब्लम होगा तो अलाइन हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। अगर वात प्रकोप हो गया वहां पे, अग्निकर्म हम आपको आगे बता देंगे, हम ट्रेन कर देंगे, ऐसा प्रोसेस, हम ऐसा छोटा सा प्रोग्राम बना देंगे जिसमें ऐसे लोग हैं आए और उनको बता देंगे कि भैया आप ये चीज ले लो और उसे ऐसा कर लो। ठीक है ना? बट वंस अगेन फ्लो को ठीक करना तो
जरूरी है, अलाइनमेंट करना तो जरूरी है, उसके बगैर तो ट्रीटमेंट चलेगा नहीं। तो वो आपको अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। वेरी नियर फ्यूचर विल हैंडल इट। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे रजनी जी का। रजनी जी आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद बाकी सब जो है व्हाट्सएप में ग्रुप में पूछ लेंगे क्वेश्चन अपना। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार, मैं बोलिए। बहुत टाइम से इंतजार कर रही हूँ, बहुत बार से। मेरी ब्रेन की नर्व्स जो है पिछले 7 साल से वाइब्रेट, और मैं बिल्कुल, मतलब अब ये कंडीशन है कि मैं बिल्कुल सो नहीं पाती, मेरे को स्लीपिंग पिल लेके सोना पड़ता है। मतलब मेरे को कोई एलोपैथिक मेडिसिन सूट नहीं करती। कोरोना में हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर के साथ मतलब मेरा हार्ट मेरा 30% वर्क कर रहा था। अब मतलब मैं आई एम क्वाइट इंडिपेंडेंट, यू कैन सी मी। मतलब मैं व्हील चेयर पे या बेड पे कुछ नहीं हूँ, सारा काम अपना खुद से करती हूँ। तो और मतलब बीच में डिप्रेशन में आ गई थी मैं, लास्ट ईयर बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। तो एक हमारे योगा थेरेपिस्ट हैं जो, उन्होंने मुझे काफी कुछ योगा, और अभी भी कर रही हूँ मैं। तो पर मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि मैं बिल्कुल भी वाइब्रेशंस की वजह से सो नहीं पाती ना। मतलब मैं मेडिटेट बहुत करती थी ना, मैं मेडिटेट कर पाती हूँ ना, मैं सो पाती हूँ बिना मेडिसिन के। और मेरे पास सिर्फ एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, मैंने हार्ट की सारी मेडिसिन बंद कर दी थी डॉक्टर ने। मैं खा ही नहीं सकती, मैं मेडिसिन ले ही नहीं सकती, इतना रिएक्ट करती है ना मुझे मेडिसिन। एक्चुअली तो मैं बहुत मतलब जब से आपसे देखा है मैंने, सॉरी, जब से मैंने ये देखा है पिछले कुछ दिनों से, मतलब आई एम कॉन्टिन्यूसली इन टच विद नेहा जी, अनिल जी। मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब कुछ तो वेट की बात क्या कर हो रहे हैं? सके, कुछ मेरी लाइफ वापस आ सके, ताकि मैं मतलब कुछ मेडिटेट कर सकूं प्रॉपर्ली, बैठ सकूं, सो सकूं। 2 अच्छा, दवाइयां खाती हूँ मैं सिर्फ। एक चीज हमारे साथ में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको थोड़ा बताऊं कि सपोज कीजिए कि जितने भी ये लंबे चेहरे वाले हैं ना, थोड़ा सा स्माइल करिए, है ना, थोड़ा स्माइल करिए। देखिए प्रॉब्लम तो रहेगा ही, है ना, मगर स्माइल करना ना छोड़ो। तो स्माइल करते हैं तो मालूम है 1 लाख आपके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बिल्कुल मालूम है। तो और एक वही स्माइल, को जानना है, उसके बाद ही स्माइल करेंगे, ये कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। ये कभी कंडीशन ना रखें, ये हम गलत कंडीशन रख रहे हैं कि मुझे 1 लाख केमिकल रिएक्शन जानने हैं तभी हम स्माइल करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप जीवन को आज के टाइम पे भी जी सकते हैं और जी ही रहे हैं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बिना जाने भी जी रहे हैं। अगर आपको ए बी सी कुछ भी नहीं मालूम है, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तो शायद बेटर जिएंगे। जितना पढ़े लिखेंगे उतना ही मुश्किल हो जाती है। तो आपको जानने की जरूरत नहीं होती जीवन को जीने के लिए। और अगर आप बिना ये ज्ञान लिए जीवन को जीते हैं तो आप जीवन को ज्यादा समझ पाते हैं। पहली बात, कंडीशन अगर ज्यादा खराब है, सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग दे रहा हूं कि ये इकलौता तरीका है जिससे आपका शरीर ठीक होगा। ये सारी रीजनिंग दे रहा हूं मैं। तो अगर वो रीजनिंग आपको नहीं समझ में आता तो एक काम कीजिए, इसको बार बार सुन के देखिए कि क्या कहीं पे भी गलती है, और मुझे पकड़ने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं पकड़ मुझे के ये पता है कि नहीं, मैं सबके गलत, लिए बोल तो हो, आपके लिए नहीं बोल रहा मैं सबके लिए बोल रहा हूं कि आप देखिए कि आपको भी समझ में आएगा। आप अपने आप को जितना जान सकते हैं, बिना पढ़े लिखे आप सब कुछ जानते हैं इस लाइफ के बाद। पढ़े लिखने के कारण कुछ गड़बड़ी हो जाती है, अब कुछ और उल्टा सीधा जानने लग जाते हैं। तो एक तो बात ये कि जो कंडीशन है, इवन हमारे पास में हम हार्ट का प्रोग्राम करते हैं, हार्ट डिसीज एंड ब्लड प्रेशर का प्रोग्राम करते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका भी कम होता है, अगर वो कुंभक करते हैं, नॉर्मली कुंभक करते हैं, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेंटिलेशन का सपोर्ट कई लोगों को नहीं मिला कोरोना पीरियड में, हम लोग फ्री में करवा रहे थे एक प्रोसेस। लोगों ने वो प्रोसेस किया, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वेंटिलेटर है, हमारा तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो हमको मिला भी नहीं, और हमको पहले तो डर लगा, उसके बाद हमने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, स्वामी जी ने बोला कि ये करो, हमने करना शुरू किया तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ी आगे। लोग बिना दवाई के, एक ही चीज मैं बोलता था, दवाई मत लो, देखो कुंभक करो ठीक हो जाओगे। लोग 3-3 दिन 5-5 दिन के अंदर ही ठीक हो जाते थे, और जो दवाई लेते थे वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन, और कई तो हाँ तो वो निकल। दवाइयों ने खराब किया मुझे हाँ, भी। तो वो दवाइयों की वजह से बहुत खराब। और यही बात मैं बोल रहा हूं
कि दवाइयों की वजह से खराब हो रहा है, दवाइयों की वजह से जो खराब हो रहा है उसको कम से कम रिवर्स तो कीजिए। किसको खराब कर रहे हैं? अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। तो शरीर को रिवर्स तो करना पड़ेगा। अब देखो क्यों झंझनाट हो रही है, न्यूरो डीजेनरेशन है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, चाइना के प्रेसिडेंट को भी ये प्रॉब्लम है, शी जिनपिंग उसको भी प्रॉब्लम, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, साफ बताऊं आज इसको सोल्यूशन नहीं है। और इसमें क्रैश होने का चांसेस, सडन क्रैश होने का चांसेस होगा। तो वेट नहीं करना। इतने टाइम से क्यों वेट कर रहे हो? कौन सा मुहूर्त चाहिए अपने शरीर को स्ट्रेंथ देने के लिए? कौन सा मुहूर्त चाहिए? कोई मुहूर्त लेने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे, अरे आप अरबों खरबों की आपकी वैल्यू है, हम तो ऑलमोस्ट फ्री में दे रहे हैं आपको, ताकि ये लोगों तक पहुंचा पाए। हम ये पैसा जो चार्ज कर रहे हैं, क्यों चार्ज कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि आप केपेबल बने, हमारे को और सही होकर और लोगों तक पहुंचा पाए। तो जो आपकी लाइफ की वैल्यू है ना, बहुत कीमती है। अगर आज मेरे पास मेरा समय आ गया तो एक सेकंड भी आप नहीं दे पाएंगे मुझे। मेरी लाइफ की इतनी वैल्यू है, कोई भी नहीं दे पाएगा। मैं अरबों खर्च करूंगा तब भी नहीं मिलेगा मुझे, एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। मगर अगर आप कुंभक करेंगे तो आपके घंटों, दिन, हफ्ते, महीने हम एज बढ़ा सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो आप अरबों खरबों देके नहीं कर सकते वो हम आपको ऐसे ही दे रहे हैं। तो न्यूरो रीजनरेशन कैसे होगा? कुंभक से होगा, और कोई तरीका नहीं है। सही ट्रिगर देना पड़ेगा, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा आपका। जितना न्यूरो डिजेनरेशन दवाइयां खा के किया है वो रिकवर होना शुरू होगा। कितना रिकवर होगा, किस एज में कितना रिकवर होगा, केवल क्वेश्चन तो यही है ना। 100% रिकवर होगा ये तो हम बता रहे हैं। मगर अगर मुझे एक बात बताइए कि अगर आपकी लाइफ अगले आने वाले 6 से 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर इतनी अच्छी हो गई कि आपको लगा कि मुझे जीवन में जो अंदर से खुशी हो रही है वो पहली बार हो रही है, इसकी कोई वैल्यू है? देखिए, लंबा जीवन नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहुत खूबसूरत, बहुत सैटिस्फाइड होना चाहिए, है ना। ये कुंभक के अलावा आपसे मिल नहीं सकता। यही काम हम कर रहे हैं। देखो आपके जितने, ये टेक्निकल बातें तो मैंने बोल दिया कि देखो न्यूरो रीजनरेशन है, इसको रीजनरेट करना पड़ेगा। कैसे रीजनरेट करेंगे? कुंभक से रीजनरेशन होता है। आपके बाकी मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे, ठीक है ना। आपका डिटॉक्स एस्पेक्ट ठीक होगा, आपके ऑर्गन स्ट्रांग होंगे, आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। ऐसे में क्या होता है, झंझनाहट होती है, स्टेबल नहीं रहता पूरा शरीर, क्योंकि ब्रेन से ऑलमोस्ट रेगुलेट हो रही है सारी चीजें, स्टेबल नहीं रहता शरीर। पूरी बॉडी इंटरनली शिवर होती है, पूरी बॉडी इंटरनली। बाहर से मैं मतलब ठीक हूँ, तो अंदर से शिवरिंग होती है और बहुत सारी अजीब अजीब सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो होगा ही होगा। आप थोड़े दिन कुंभक करके देख लीजिए, है ना। प्रोग्राम को सीखने में ही आपको पहले 9 हफ्ते लगेंगे। 9 हफ्ते के बाद में एक मैं आपको डील दे रहा हूं कि आप 3 महीने कस्टमाइजेशन होने के बाद में कर लीजिए। आपकी प्रॉब्लम जो है ना, कई लोगों की प्रॉब्लम, यहां पे ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम 80 से 90% खत्म हो जाए। अगर मैं आपको ये बोलूं चलो 80 से 90 कुछ लोगों का नहीं हुआ, 40% हो गया, 20% हो गया, यानी 1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल में हो जाएगा। अगर आप 3 साल में पूरे हेल्दी हो गए तो क्या ये खराब डील है? क्या कोई और जगह है जहां पे ये हो सकता है? शायद आप किसी की भी, मैं बता रहा हूं, शायद 3 साल समय भी ना हो उसके पास में, ऐसा भी हो सकता है। 3 साल समय भी ना हो, लेकिन अगर वो 3 साल में उसकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होगी तो उसको तो हमने उसका समय भी एक्सटेंड कर दिया। तो ये बात आप समझिए कि इस वक्त में आपको अपने शरीर को एड्रेस करना है, शक्ति देनी है। यही बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। यही आपको बचाएगा, यही आपको अच्छा करेगा, यही आपको अच्छा करेगा। कुंभक से हम इसी को मजबूत कर रहे हैं, इसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इसको सपोर्ट दे रहे हैं। जितना खराब हमने किया उसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। कहां करेंगे? इसी को करेंगे रिवर्स, इसी को शक्तियां देंगे तो ये रिवर्स करेगा और आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। ये गारंटीड है, 100% गारंटीड। प्लीज वर्क अपॉन योर बॉडी,
आपका वेबिनार में वो ज्वाइन कर, मतलब दैट आई एम रेडी टू डू बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू नाउ। मतलब मैं रिटायर्ड हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। आई कैन ना गिव फुल टाइम टू माई सेल्फ। अगर फुल मुझसे टाइम टू माई क्वेश्चन भी पूछा, मैंने जवाब नहीं भी मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी, वर्क अपॉन योर बॉडी। प्रोग्राम ज्वाइन करके आप शुरू कर दीजिए इसके ऊपर काम। और नहीं, ये मैंने बहुत ज्वाइन किया हुआ है वेबिनार 5 डेज का, जो मैं दिन में 2 बार करती हूँ। मेरी थेरेपिस्ट वाला भी करती हूँ। मतलब आई रियली ट्राई टू वर्क ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को जो मेरे MRIs है ना, उसमें मुझे डॉक्टर्स ने बोला था हैप्पीनेस के सेल्स खत्म हो गए, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी सैड, नो डाउट अबाउट इट। मतलब अब हैप्पीनेस तो के दिस वाज द जिंदगी। चिंता ना करें, हम बना देंगे हैप्पीनेस के सेल। आपका शरीर बना देगा हैप्पीनेस, बहुत हैप्पीनेस के सेल बनाएगा, चिंता ना करें। हमारे पास में से बहुत लोग आते हैं और खूब बाद में चल के कहते हैं कि अंदर से खुशी निकल रही है, तो हम बना देंगे, है ना। ज्वाइन दिस प्रोग्राम। और आप लोगों का सभी का वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी राजविभू की गद्दी से आप सभी लोगों को खूब खूब आशीर्वाद। आपके फ्यूचर के लिए, आपका खूब फ्यूचर बहुत सुंदर, बहुत हेल्दी हो, यही शुभकामनाएं। बहुत Thank you so बहुत much. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।